Yeah, I think I'm live now properly. Sorry for the delay. There was some technical problem and it was not streaming. I hope it is streaming correctly now. So, welcome to the QA Booster workshop and good afternoon, all of you people who are attending this live. The purpose of this QA Booster session is to give you some techniques where you can maximize your score by 2 to 3 questions. Okay, increase your attempts by 2 to 3 questions. Sometimes what happens in the exam is there's a reason this is called as quantitative aptitude and not mathematics. Maths तो हम use करते ही हैं, all the chapters, concepts, topics and everything we read. But sometimes we have to like apply ourselves. And the word aptitude means the art of problem solving. How do you approach a problem and solve? Necessarily it has to be a maths problem all the time. So given a question, as long as we are able to figure out the answer correctly, that is what matters at the end. एग्जाम में कोई आके रफ कॉपी तो चेक करेगा नहीं. As long as you are able to figure out the like right answer, that is what matters. Now not every question we can do this, like maybe eliminate the option, substitute values, वैसे हर क्वेश्चन में तो नहीं कर सकते, but definitely 2-3 क्वेश्चन तो पर एग्जाम में वैसे होता है where you can apply this and maximize your attempts. तो जितना क्वेश्चन अभी तुम कर रहे हो, definitely if you start thinking in that way, you can increase your attempts by 2 to 3 questions. Okay, so that is the purpose of the first session of QA score booster. Similarly, accordingly, jitne score booster workshops I'll take, I'll give you different perspectives of how you should look at quant section and what all things you can change in what you are already doing. Maybe you will be doing some things already, maybe some things you have not thought of that kind of a way. So session say if you find any insight useful, definitely try and use it in your tests and see whether it works for you or not. I'll definitely hope it works for you and you improve your score by 3-4 questions at least. Okay. Good afternoon, welcome all of you. This is just a brief background of mine, and you can get all these details in the profile section. I was preparing like you guys are right now, and because I have gone through the same process, that is why I can relate what all things one must do in the last few days that is left, so that you can increase your score. It's, trust me, it's not very difficult. Some people assume or they have already made up their mind that it's too difficult to get a 99, but it's not as difficult as it sounds. Okay, you can score a 99 or you can definitely get a good score. If not 99, maybe a 97, maybe a 95, but you can get a good score if your approach to the exam is correct. Okay, you have to approach the exam correctly, understand what the exam requires and be smart enough to pick the right question. उतना ही है. Nobody is asking you to be the expert in the particular section. Okay, quantitative aptitude का expert बनो, वैसे नहीं चाहिए. If you're not good in maths, you're not good in maths, it's okay. So don't take too much stress on being good in maths. The exam was not about being good in maths. The exam was about getting the right amount of questions correct. Can you do that? If yes, then you are good to go. You don't need to worry about maths अच्छा हो रहा है, verbal अच्छा हो रहा है नहीं, reasoning अच्छा हो रहा है नहीं, इतना चीजें सोचना नहीं है. Keep your task very simple. ठीक है. Now coming Sunday, November 13, All India mock test once again, and और एक mock test उसके बाद next Sunday को November 20th को free for all test for everyone. So please participate in the All India mock test. Use my code DASLive to register for free. Free है सबके लिए. You don't need any subscription. You can participate. A lot of people would be like taking part in the test, so you'll get a very good idea about where you stand across or against the prepared candidates, and you can assess your performance and like modify accordingly. और क्या changes करने चाहिए, कहाँ पे improve करना चाहिए, where are others performing, why am I not be like I'm not performing in that manner, how are they scoring this much, why am I not scoring this much, where is it going wrong for me. ये सोचोगे तभी जाके improve होगा. जब तक ये नहीं सोचेंगे and will just keep solving, तो ठीक है, एक solving ability तो आता है, but कभी अपना optimum performance निखर के नहीं आएगा बाहर. ठीक है. So you'll have to introspect after every test. Think what is going right for you, think what is going wrong for you, what all things you can do to improve your score. Every time, every like test, you have to sit back and think on this. Okay. Now last mile to CAT, this is a 6-hour marathon session. Every day होगा from 14th to 20th November 3 p.m. to 9 p.m. Okay, जहाँ पे all concepts and topics will be revised before the exam. All important CAT concepts last जो ये 7-day session में होगा. Good quality questions will be practiced here, and definitely it will help you boost your like level of preparation.
ठीक है. Question selection, time management strategy and all, definitely you'll find it very useful. All our Unacademy channels, I hope you have subscribed. एक Catalyst है, then Unacademy CAT है, and then a 99 percentile club है, and let's crack verbal. So these are some Unacademy का CAT channels. So explore this, and all these sessions will be live on these channels, Catalyst and 99 percentile club में. So do attend these sessions. Okay, questions भी अच्छे मिलेंगे practice करने के लिए, and live practice भी कर पाओगे, discussion भी कर पाओगे, and it will definitely boost your preparation. ठीक है. So very good event. All of you do subscribe to the channel, and notification already आ चुका होगा last mile के sessions का. So wait for the sessions and do take part. Now, this is a course that I recently completed. If you are planning to like join or take a subscription, don't forget to use my code DASLive and you can get a 10% discount on your plus or an iconic subscription. I'll talk about the subscription towards the end of the video, but you can avail a 10% discount if you are using this code. Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon. So let us see the first question. Let's take a look at this one. We have to find the value of this. Find the value of this question, or this expression. 1 by b square plus by plus y square minus 1 by b square minus by plus y square plus 2by by b to the power 4 plus b square y square plus y to the power 4. Now in this question, nothing is told about b or y. Generally बस ये तुम्हें question दे दिया. So a lot of people try to factorize and take LCM and all ये सब करना try करते हैं. होगा, that's the normal process, but don't go by that method because nothing is told. We'll call these kind of questions as generic questions. तो जेनेरिक क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे? यू सॉल्व टेकिंग स्पेसिफिक एग्जांपल्स. मतलब मैं यहाँ पे मान लो b इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, तुम 2 भी ले सकते हो, कुछ भी लो. मैं 1 ले लिया. अगर 1 लेते हैं तो क्या आता है? फर्स्ट दिस इज 1 बाय 1 देन 1 देन 1, तो 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2 बाय 1 प्लस 1 प्लस 1. So it is like 1 by 3 plus 2 by 3 minus 1. So basically 1 minus 1 I will get 0. अब तुम बोलोगे कि मैं रैंडमली कैसे अज्यूम करके कर लिया. डज इट मैटर तुम b को क्या ले रहे हो, y को क्या ले रहे हो? बिकॉज इफ द क्वेश्चन इज नॉट स्पेसिफाइंग दैट, तुम b को y को 1 लो या 2 लो या अलग अलग लो, जैसे भी लो आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा. ऑलवेज यू कैन ट्राई विथ अदर वैल्यूज. And the principle that we follow is true for one, true for all. If my assumption is like in coherence with the question, it's nothing wrong. So whatever answer I am getting, that should be correct as well. And because there is no possibility of multiple answers, so this is answer. So देखो यहाँ पे I saved a lot of time just by substituting b equal to y equal to 1. So always have an open eye for these kind of generic questions in the exam. I'm not saying every question is going to be like that. And it can be from any area. नंबर से हो सकता है, अलजेब्रा से हो सकता है, मोस्टली अलजेब्रा से रहता है, अरिथमेटिक से भी हो सकता है, ज्योमेट्री से भी हो सकता है, मॉडर्न मैथ से भी हो सकता है. हैव एन ओपन आई फॉर दीस काइंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. लेट्स सी अनदर वन. यहाँ पे देखो एक कंडीशन दिया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इज 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. नथिंग एल्स इज टोल्ड अबाउट एक्स वाई जेड, वेदर दे आर पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल, रैशनल, इंटीजर, कुछ भी नहीं बोला. तो मैं मान लो x को 1 ले लेता हूँ, y को 2 ले लेता हूँ. देन आई विल गेट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ z फॉर विच दिस विल बी 0. तो z कितना आएगा? मैं कैलकुलेट कर लो. एक्स वाई 1 इंटू 2 प्लस वाई जेड 2z प्लस एक्स जेड इज ओनली z, दिस इज इक्वल टू 0. तो 3z इज इक्वल टू माइनस 2, तो z इज इक्वल टू माइनस 3. So I got x is equal to 1, y is equal to 2 and z as minus 2 by 3. And ये वैल्यूज लेके बस इस एक्सप्रेशन में पुट कर देना है, एंड वी विल गेट आवर आंसर.
तुम यहाँ पे जो भी वैल्यू लोगे सेम आंसर आएगा। ठीक है, तुम और भी इजी वैल्यू ले सकते हो। मान लो तुम बोलोगे मैं x को 0 ले लेता हूँ एंड y को 1, तो अकॉर्डिंगली z का कुछ एक वैल्यू आ जाएगा। z आई थिंक -1 आ जाएगा। x को 0 ले लोगे एंड y को 1, तो z also I think is 0 because this is 0 plus z plus 0 is 0, तो z भी 0 आ जाएगा। बट दोनों 0 लेना आई थिंक विल बी डेंजरस, बिकॉज इन दैट केस क्या होगा ना, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। सो ट्राई टू अवॉइड टेकिंग 0। तुम और कुछ भी वैल्यू लो सेम आंसर आएगा। एंड देन जस्ट सब्स्टिट्यूट 1 by 1 x square is 1, 2 into 2 by 3, 4 by 3, 1 by y square is 4 minus zx, and then 1 by z square is 4 by 9 minus xy। बस अभी इसको सॉल्व कर देना। दिस इज 3 by 7 plus 3 by 3 into 4 12 plus 2 14, and then this is minus 9 by 14। तो तुम 14 एलसीएम ले लो। दिस इज 6 plus 3 9 minus 9, तो 0 by 14 again you are getting 0। ऑप्शन 1। सोच रहे हो कैसे सॉल्व कर रहे हैं? आई एम नॉट टेकिंग एलसीएम, आई एम नॉट ट्राइंग टू फैक्टराइज और सब्स्टिट्यूट, सीधा सीधा वैल्यू पुट करें बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर जेनरिक क्वेश्चन। I picked these questions from previous papers and previous mocks and everything, but you should have an open eye for these kind of questions in the exam। कुछ नहीं तो 2-3 क्वेश्चंस तो तुम एक्स्ट्रा कर ही पाओगे अगर वैसे सोचो। जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग। लेट अस सी अनदर वन, लेट्स टेक अ लुक एट दिस वन। यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 दिया है, तो तुम a को कुछ भी ले सकते हो। a इज ग्रेटर देन 0, a, तो मैं a को 1 ले लेता हूँ। उस क्वेश्चन से a शुड बी ग्रेटर देन 0, तो आई कैन टेक a एज 1। a को 1 लोगे तो कितना आता है ये वैल्यू? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1, क्योंकि a का कुछ भी पावर लो अभी 1 ही आएगा टिल इन्फिनिटी। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x अगेन, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और आई गेट x इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस b स्क्वायर, और आई गेट 1 प्लस और माइनस √5/2। ये वैल्यू आना चाहिए तुम्हारा। तो ऑप्शंस में चेक कर लो, a को कहाँ पे 1 पुट करने से ये वैल्यू आ रहा है 1 प्लस और माइनस √5/2। a1 1 एंड 1 प्लस 4 5/4 आ रहा है। 1 ये भी बाय 4 आ रहा है, तो 1 प्लस √5/2 यहाँ पे आ रहा है। तुम बोलोगे व्हाई नॉट दिस वन? दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, बट स्क्वायर रूट का वैल्यू पॉजिटिव में लेना चाहिए, तो दैट इज आई विल गो विद ऑप्शन 3। कितना इजीली सॉल्व हो गया देख रहे हो? व्हाई विल आई टेक एनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू? क्योंकि एक वो 1 के अलावा और तुम कुछ भी ले रहे हो, आप बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू जाना स्टार्ट हो गए। बट ग्रेटर देन 0 बोला था तो 1 ले लेते हैं, सबसे सिंपल वैल्यू। सब्स्टिट्यूट द मोस्ट सिंपल वैल्यू एंड देन अकॉर्डिंगली ऑप्शन से चेक कर लो कि a को 1 कहाँ पे पुट करने से आई एम गेटिंग दिस, एंड बन गया काम। यस ना? Hope this is clear and give you like an idea how to identify such questions। ये पता नहीं लगेगा बिकॉज एग्जाम में तुम जो स्ट्रेस में सॉल्व करो, यू विल नेवर रियलाइज कि इतना जल्दी टाइम चला गया, एंड बाद में कभी सोचोगे अरे इसको भी ऐसा कर सकते थे। यू हैव टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस एंड थोड़ा रिलैक्स्ड माइंड में सोचना पड़ेगा। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब हम माइंड से वो बैरियर हटा देंगे कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इजी है, वैसा नहीं है। क्योंकि जब तक हम वो इजी डिफिकल्ट में उलझे रहेंगे, विल नेवर बी एबल टू फिगर आउट दिस इंटरेस्टिंग अप्रोच ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, क्योंकि माइंड में वो चीज़ कभी आएगा ही नहीं। विल ऑलवेज बी इन्वॉल्व इन दैट डिफिकल्टी, इसको छोड़ देते हैं, इतना स्कोर आएगा उतना नहीं आएगा। इफ यू आर विलिंग टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, कि यू आर ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, तभी जाके तुम ये सब शॉर्टकट्स फिगर आउट कर पाओगे, या इवन इफ इट्स नोन टू यू विल बी एबल टू अप्लाई इट इन द एग्जाम। ठीक है?
देन लेट्स टेक अ लुक एट दिस वन। क्या लग रहा है इसका क्या आंसर आएगा? Try and think of it in the ways we have solved the previous questions. Let me know your answer in the comment section. I'll wait for a minute. A plus 1 whole square, b plus 1 whole square, c plus 1 whole square divided by a plus b plus c is given as 4. तो इसका वैल्यू कितना आएगा? Can I take here a is equal to b is equal to c is equal to 1? देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है। 1 plus 1 अगर मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 2 square plus 2 square plus 2 square divided by 3 आ रहा है 4, तो सेटिस्फाई कर रहा है। a equal to b equal to c equal to 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे बस पुट कर लो 1 plus 1 by 1 minus 1 into 1 plus 1 by 1 minus 1 into 1 plus 1 by 1 minus 1। सबको 1 ले लेंगे, 2 square 2 square 2 square 4 plus 4 plus 4 12 by 3। तो अगर 1 ले लेते हो तो सिर्फ कितना आ रहा है लास्ट को 1 into 1 into 1। फाइनल आंसर इज 1। ओके, तो दिस इज अ जेनरिक क्वेश्चन विथ अ कंडीशन। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन को यूज करके अगर मैं कुछ भी वैल्यू फिगर आउट कर लिया which satisfies this condition, then whatever answer we will get, it has to be true because we didn't assume anything violating the conditions of the question। हम पूरा क्वेश्चन के कंडीशंस के साथ ही अज्यूम किए हैं, तो जो आंसर अपना आएगा वो करेक्ट ही होना चाहिए। व्हाई विल इट बी रॉन्ग? तो ट्रू फॉर वन, ट्रू फॉर ऑल। हाँ, थोड़ा बहुत प्रेरणा हिट एंड ट्रायल करके देखो क्या वैल्यूज आएगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज आर सिंपल वैल्यूज। ऐसा कभी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज नहीं आएगा, सिंपल वैल्यूज ही आएगा। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज सिंपल वैल्यूज। ये 1 0 -1 वैसे ही वैल्यूज रहेगा मोस्ट ऑफ। तो ये 4 तो अलजेब्रा टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब थोड़ा अलग क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रिंसिपल कैन बी अप्लाई इन सम डिफरेंट क्वेश्चन। लेट अस से लाइक दिस नंबर्स। ये नंबर्स का क्वेश्चन है। बोल रहा है 2 डिजिट नंबर इज क्यू टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो ऐसा एक 2 डिजिट नंबर सोचो जो अपना सम ऑफ डिजिट्स का मल्टीपल होगा। समझ रहे हो? तो फॉर एन एग्जांपल आई टेक 24। 24 is like 4 times the sum of the digits. The number found by interchanging the digits of the number, that means 42, is how many times the sum of its digits? This is 7 times the sum of its digits. As per my assumption, मैंने नंबर लिया था 24 which is 4 times। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे q का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। The number found by interchanging the digits of the number is how many times the sum of its digits? तो मेरे को मेरा जो assumption के हिसाब से मिला 7 times, which in the options has to be written in terms of q। तो इस 7 9 minus q, q अपने केस में 4 आया, 9 minus 4 नहीं, और 4 plus 1 नहीं, 11 minus 4 7 yes, and 4 minus 1 नहीं, तो 7 which is 11 minus 4, so that is our answer। तो सिंपल, 30 सेकंड भी नहीं लगेगा सॉल्व। यू कैन टेक एनी अदर एग्जाम्पल। तुम और एक एग्जाम्पल सोचो। सपोज आई विल टेक 36। इट इज 4 टाइम्स 3 plus 6, so 63। इट इज 7 टाइम्स 3 plus 6 अगेन। जैसे भी लो। ओके, सपोज तुम लोगे 18। इज 2 टाइम्स 1 plus 8, so 81। इट इज 9 टाइम्स 1 plus 8। तो अगर दिस इज q, 9 is 11 minus q, all the time it will be this 11 minus q। इसको नॉर्मल प्रोसेस में भी नंबर को ओपन करके इंटरचेंज करके सबट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं रिलेशन। इट विल बी टू लॉन्ग, 1-2 मिनट का काम है। यहाँ पे देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया। तो यू कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन एवरी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन।
बस वी नीड टू हैव एन ओपन आई कि नंबर्स में कभी यूज हो गया, कभी बोल रहा होगा, सपोज फॉर एन एग्जांपल ज्योमेट्री क्वेश्चंस में भी लॉट ऑफ टाइम्स ट्रायंगल के बारे में बोल रहा होगा, इफ नथिंग स्पेसिफिकली हैज बीन मेंशन आई कैन जस्ट अज्यूम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड सॉल्व। ओके, दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग, एंड इसीलिए ये सेक्शन को एप्टीट्यूड बोलते हैं, नॉट मैथमेटिक्स। दैट वी आर नॉट गोइंग ऑलवेज बाय ट्रेडिशनल मैथ्स। मैथ्स तो चाहिए, बट समटाइम्स दीज ऑल टेक्निक्स ऑल्सो एड लाइक एड्स टू योर वैल्यू। एग्जाम में कहीं पे लास्ट मिनट में एक क्वेश्चन करो, कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है, तुम्हें देख के लग रहा है ये होगा और सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लिया, बस गॉट द आंसर। नोबडी इज गोइंग टू चेक योर रफ कॉपी तुमने सॉल्व कैसे किया। दैट इज ऑल्सो एन आर्ट ऑफ सॉल्विंग, इट्स नॉट लाइक अ चीटिंग और समथिंग, दैट इज ऑल्सो एन आर्ट ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, लेट अस सी दिस वन, दिस वाज द प्रीवियस कैट क्वेश्चन। मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक्स है, खुद सोचो इसको कैसे अप्रोच करेंगे। एक्स एंड वाई आर टू पॉजिटिव नंबर सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन दे दिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एक्स प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर वाई प्लस 1 बाई वाई का स्क्वायर। तो मैं इसको मिनिमाइज करना है। थिंक ऑफ इट लाइक इन टर्म्स ऑफ अ लेमैन। पूरा तुम्हें मैथ्स से कुछ नहीं पता, जस्ट पूरा प्योर लॉजिक बस यूज करो। दैट अगर मैं इसको मिनिमाइज करना है मुझे ये एक्सप्रेशन को, आई हैव टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, व्हिच वन शुड आई मिनिमाइज। एक तो सम है, मैं एक्स को मिनिमाइज करूं या वाई को मिनिमाइज करूं, व्हिच वन शुड आई मिनिमाइज to minimize the overall expression? Should I go for x, minimizing x, or should I go for minimizing y? If you carefully observe, x and y में कोई डिफरेंस है नहीं, x है तो y है, 1 by x है तो 1 by y है, इसका भी स्क्वायर y है, उसका भी स्क्वायर y है, so I can say x and y are equally present. तो हाउ कैन यू से दैट मैं एक को मैक्सिमाइज करके दूसरे को मिनिमाइज करूंगा तो ओवरऑल मिनिमाइज हो जाएगा? हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस इफ बोथ ऑफ देम आर इक्वली प्रेजेंट? हाँ चलो, एक का डिग्री 3, दूसरे का पावर 2, किसी और वेरिएबल का पावर 5, तो जिसका ज्यादा पावर है उसको मिनिमाइज करो, जिसका कम पावर है उसको मैक्सिमाइज करो, वैसे कुछ लॉजिक लगाते हैं। इफ एवरीथिंग इज इक्वली प्रेजेंट, सिमेट्रिक, जैसे एक्स दिख रहा है वैसे ही वाई दिख रहा है, तो देर इज नो लॉजिक ऑफ टेकिंग एक्स टू बी मैक्सिमम और वाई टू बी मैक्सिमम फॉर दैट रीजन। तो उसमें कुछ क्या नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वल ले लेंगे बस। तो 1/2 प्लस 1/1/2 इज 2 का स्क्वायर, बिकॉज दैट्स द ओनली वे। तुम क्यों किसी को मैक्सिमाइज करोगे या किसी को मिनिमाइज करोगे? तो 2.5 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, so you get 12.5. This was a previous CAT question. समझ रहे हो how to approach and how to think? Sometimes common sense helps us a lot. And इसी टाइप का क्वेश्चंस आया है एग्जाम, नॉट लाइक आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड, दिस वाज अ प्रीवियस कैट पेपर 2001 या 2002 में आया था। तो हर साल एक दो क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा हर चैप्टर से, बट स्टार्ट थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स। समटाइम्स एलिमिनेट हो जाएगा, कभी कभार ऑप्शन इतने ही ऑब्वियस है, थोड़ा अगर सोचेंगे ओपन माइंड में पता चल जाएगा ये नहीं होगा। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन दैट ऑल्सो मैटर्स। Read the question like very carefully, because if you read it correct, you almost have a 50% plus chance of solving that question अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है। क्वेश्चन पढ़ते टाइम अगर फोकस नहीं है एंड वी थिंकिंग अबाउट ऑल अदर थिंग्स, ये डिफिकल्ट हो गया, ये वो हो गया एंड ऑल, तो दैट विल लाइक ओनली क्रिएट डिस्टर्बेंस इन माइंड एंड फिर नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, so hope all of you got an idea about this. The first score booster session was all about this, how do you optimize your like attempts, दो तीन कैसे increase कर सकते हो। Gradually in the next sessions, we'll take up different aspects of how to approach the QA area in the exam, and hope it will give you some useful insights and you can increase your attempts by 3-4 questions by the end of all QA booster sessions. Unacademy CAT Elite batch November 10 आज से start हो रहा है. These are the batch highlights, so if you want you can join the batch by taking a plus or an iconic subscription. Use my code and you will get a 10% discount on your subscription prices. Previous questions I repeatedly say in every session, hope all of you are solving. If not, please solve, go through all the previous questions, it will definitely like help you. And Let's Crack Verbal is our new verbal channel. If you're struggling with the VRC part, you can follow the content on this channel, you will definitely find it useful. सब्सक्रिप्शन के बारे में बोल रहा था इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, प्लस आइकॉनिक थोड़े थोड़े अलग अलग फीचर्स हैं,
like notes यहाँ पे digital है, but here you will get physical notes. GDP award preparation, personalized mentoring and all you get in iconic. Plus में भी है. So depending on your requirement, if you are taking a subscription, don't forget to use the code TaskLive and get a 10% discount. So thank you once again, all of you from my end, and hope you guys liked the class and found it useful. Do like and subscribe to the Unacademy CAT-alyst channel, and keep studying, keep practicing, and we'll meet again in the next session. Till then, have a nice day. Bye bye.